Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. Welcome to your science class. We are studying our chapter number 5, separation of substances. Until now, we have discussed different methods of separation, like how can we separate mixtures. And in yesterday's class, we have discussed about evaporation, condensation, and distillation. So here's a small activity. In order to obtain pure water from a salt solution, we take the salt solution in a flask. To the flask, we attach a special apparatus called Liebig condenser through which cold water is made to flow. When the flask is heated, water from the salt solution evaporates and forms water vapor. This water vapor passes through the condenser. Here, the water vapor is cooled due to a cold water flowing through the condenser. Water vapors condense and droplets of pure water formed are collected in another flask. So, in this activity, this is a conical flask, and inside this conical flask is the salt solution. Salt solution in which we have salt and water, and there is a condenser. This is the condenser. This condenser is known as Liebig condenser, and it is attached to the conical flask. And on the other side of the condenser we have another flask. So what happens, हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस कॉनिकल फ्लास्क में हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, हम उसको हीट करते हैं. इसको हीट करने पे व्हाट विल हैपन, द वाटर विल इवेपोरेट. जो लिक्विड फॉर्म है वाटर का, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, और वो जो वेपर्स है, वो जो गैसियस फॉर्म है वाटर की, वो थ्रू दिस condenser will pass through this, and in this condenser we have cold water, and because of cold water the cooling of water vapor will take place and the vapors will again converted into liquid form. So what happens here, evaporation will take place due to heat. Water liquid will convert into water vapors, and in this, because of cooling, the water vapors will again converted into liquid water. Here evaporation takes place and here condensation takes place, and this whole process is called distillation, in which evaporation and condensation both process takes place. And this is also an example of separation of mixtures using more than one method, because हमने इस process में एक method से ज़्यादा methods use करे, that's why ये इसका एक example है. Next we have solutions and solubility. So solutions are the mixture of two or more components dissolved in another substances. So what are solution? Solution हमारा एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिजॉल्व होते हैं अनदर सब्सटेंसेस में. So here we have two type of substances. One is solute. Solute is the one that is dissolved. Okay, and another is the substance in which the solute dissolves. This is called solvent. So we have solute plus solvent, and the mixture of solute and solvent makes solution. Yes, solute is the one which is dissolved in the solvent. Yes, let's take an example. We can take an example of sugar solution. So in case of sugar solution, शुगर विल बी आर सॉल्यूट, जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं. हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. सो इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज़ द सॉल्यूट, एंड वाटर जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, इट इज़ वाटर, एंड इट्स मिक्सचर विल मेक sugar solution.
Yes. So is it clear? We have two components in a solution. One is solute and another one is solvent. The substance जिसको हम dissolve करते हैं वो हमारा solute, and the substance जिसमें हम solute को dissolve करते हैं, this is solvent. The substance which is dissolved and the substance in which the solute is dissolved is solvent. Okay, a common example would be a solid such as salt and sugar. जैसा मैंने आपको बताया sugar solution, इसमें हम salt भी कर सकते हैं जहाँ पे हम sugar की जगह salt as a solute ले सकते हैं. Dissolving in a liquid called water, solutions in which water is the solvent are called aqueous solution. ऐसे solution like हमारा जो solution है वो liquid हो सकता है, solid हो सकता है, but इन केस ऑफ जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन. जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होता है, एंड ऑल्सो शुगर सॉल्यूशन इज ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन. When two liquids dissolve in each other, the liquid forming the major component is the solvent and the liquid forming the minor component is the solute. Solvent हमेशा higher quantity में present होगा और solute हमारा lesser quantity में present होगा. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called solubility of the substance. The solubility of a substance can be increased by stirring and increasing the temperature of the solvent. Similarly, the nature of substances also affects solubility. Things dissolve faster in their powdered form. For example, powdered sugar dissolves faster than cubes of sugar. Now, what is solubility? So, solubility is the ability of a substance to dissolve in a liquid. Like, कितनी फास्ट या स्लो कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट. लाइक कितना शुगर या सॉल्ट हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज. लाइक वी कैन हैव एन एग्जाम्पल. हमने अ ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने 1 स्पून ऑफ शुगर डाला और वो शुगर कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व होगा. लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर के लिए हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद शुगर डिसॉल्व नहीं होगा. Yes, so that is the solubility कि कितना वाटर कितने अमाउंट ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. और ये जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने शुगर डाला और उसे हमने पूरा डिसॉल्व कर लिया. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद हम चाहे कितना ही शुगर डालें वो और डिसॉल्व नहीं होगा. बट ऐसे केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन हीट दैट शुगर सॉल्यूशन, और हीट करने के बाद अगर हम उसमें दोबारा शुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो वो तब शुगर डिसॉल्व स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स पहले हमने अ ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें शुगर डाला, एक टाइम आया जब उसमें और शुगर हम ऐड नहीं कर सकते, बट आफ्टर हीटिंग हमने इस सॉल्यूशन को हीट करा और आफ्टर हीटिंग जब हमने उसमें मोर शुगर डाली तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया. दैट मीन्स कि हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. ऑल्सो अगर हम शुगर की क्यूब्स जो उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको डालेंगे तो उसको डिसॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू इट्स पाउडर्ड फॉर्म. अगर हम उसी को पाउडर्ड फॉर्म में डालें तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा. Okay, and this is also mentioned, the amount of a solid solute that can be dissolved in a liquid increases with temperature. However, gases dissolve much lesser at higher temperature. इसमें सेम बात कही गई है कि जो हमारा solute होता है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो सकता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें. Yes. Next we have
types of solutions. So mainly we have three types of solutions. We have saturated solution, unsaturated solution, and super saturated solution. So what happens in saturated solution? Saturated means कि saturated means when we cannot add solute to the solvent. जब हम solute को add ना कर पाए, solute cannot be added. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लाइक इन केस ऑफ मिल्क, हम चॉकलेट पाउडर या हॉर्लिक्स बॉर्नविटा एक स्पेसिफिक अमाउंट का ही वो पाउडर डिज़ोल्व कर पाते हैं और उसके बाद लम्स फॉर्म हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते. Next we have unsaturated solution. So in unsaturated solution हम more solute को add कर सकते हैं. Solute can be added. More solute can be added. इसमें हम और solute को डाल सकते हैं. Like in case of hot coffee और हॉट मिल्क और टी, लाइक क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वो ज़्यादा डिज़ोल्व कर पाएगा सॉल्यूट को. सो इन सैचुरेटेड हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, और इन अनसैचुरेटेड वी कैन ऐड मोर सॉल्यूट. एंड लास्ट वी हैव सुपर सैचुरेटेड. सो इन सुपर सैचुरेटेड वी हैव एंड सुपर सैचुरेटेड, इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. सुपर मीन्स हाई, हाई मीन्स ज़्यादा. सो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन सुपर सैचुरेटेड. लाइक आपने एक कप ऑफ वाटर या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने उसमें सॉल्ट डाला, आपने उसको स्टिर करा, मिक्स करा, वो मिक्स हो गया. फिर आपने आफ्टर सम टाइम फिर से सॉल्ट डाला और फिर से मिक्स किया. ऐसा आपने तब तक किया जब तक कि सॉल्ट वो डिज़ोल्व होता जा रहा है. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा. उस केस में आप क्या करोगे, आप उसको हीट करोगे, और हीट करने के बाद आप उसमें दोबारा सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो. सो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. So with this we have completed our chapter, and we have discussed about types of solutions: saturated, unsaturated, supersaturated, saturated. No more solute can be added. In unsaturated, more solute can be added, and in supersaturated there is a high amount of solute, and we can add more and more solute by heating the solution. So this was it for today. Thank you.